So we are seeing this first part level. Now after that, after the absorption of drug from the side of administration, so the drug will be appear in the blood, the drug will be absorbed in the blood. Now after absorption, there is a process of distribution. What is meant by distribution? Distribution is nothing but the movement of drug in various body compartment. Movement of drug in a body compartment. Okay, movement of drug in a various body. Your body has a different compartment. जैसे blood, blood क्या है? Blood is known as a central compartment. Now interstitial fluid. Now interstitial fluid is there. Intracellular fluid is there. Then various tissues like liver, kidney, various organs like liver, kidney, brain, lungs. So drug may go into the liver, drug may go into the kidney, drug may go into the brain, drug may go into the your lungs. So these are not known as organ for distribution. So movement of drug in a body compartment, organ, tissue, site of action, that is known as drug distribution. And again that depends on the physicochemical properties of drug. This is known as distribution. Now what are the barriers for distribution? What are the barriers for distribution? Barrier मतलब क्या है? Barrier मतलब अड़थड़ा, अड़ंगा, जो अड़ंगा बोलते हैं उसको. डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन कौन से बैरियर्स है, कौन कौन से अड़ंगे हैं. So you have barriers for distribution. Now first one is nothing but the physiological barrier for distribution of drug. Physiological barrier, it is nothing but the first one is simply a capillary endothelial barrier. Capillary endothelial barrier. Capillary में क्या, blood vessels, small blood vessels. Endothelial layer में small blood vessel का रहता है, उसमें barrier. So only certain kind of drugs they are permitted across that endothelial barrier. Certain amount of drugs they are permitted and other are restricted. So simple capillary endothelial barrier. So only free drugs, ionized, unionized drug with molecular weight having less than 600 daltons. They diffuse through capillary endothelium. They are absorbed. Okay? Practically speaking, this kind of, it is not a barrier. It is a just biological membrane. Now, simple cell membrane barrier, again similar to lipid bilayer. Okay, so that is simple. Distribution of drug in a different body compartment. So after the absorption of drug, drug will be distributed in the various body compartment. तो आपके बॉडी में कंपार्टमेंट कितने हैं देखो. फर्स्ट कंपार्टमेंट इज नथिंग बट द टोटल बॉडी वाटर. सो यू हैव अराउंड 70% ऑफ वाटर इन योर बॉडी. आपकी बॉडी जो है 70% वाटर से बना है. टोटल body water. Which kind of drug will be distributed in the total body water? So small molecular weight drug like water soluble molecules like alcohol and antipyrine. देखो आप जो इसको पीने की आदत होता है, अगर उसने पी लिया तो उसका पूरे बदन में क्या होता है, अल्कोहल का स्मेल आता है. क्यों? बिकॉज अल्कोहल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द टोटल बॉडी वाटर. जहाँ पे भी वाटर रहेगा उसमें अल्कोहल रहेगा, मतलब उसके पसीने से भी आपको अल्कोहल का स्मेल आएगा. तो टोटल बॉडी वाटर में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले ड्रग कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन अ डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट. So first body compartment is nothing but the total body water. So which kind of drug they are distributed in the total body water? So what kind of drug they are distributed? So small molecular weight drug, water soluble drug like such as alcohol, antipyrine. So these are the drugs which are distributed in the total body water. So alcohol is distributed in the total body water. So if you see the alcoholic, if you smell the sweat of alcoholic patient और जो भी अल्कोहलिक है उसका अगर आपने पसीना भी सूंघ लिया तो उसमें भी अल्कोहल नजर आएगा. उसका यूरिन में अल्कोहल होता है, उसके टीयर्स में भी अल्कोहल होता है. बिकॉज अल्कोहल इज अ स्मॉल मोलिकुलर वेट compound and distributed in the total body water, and that's why it appears in the all kind of fluid where water is there. Okay, again antipyrine, दूसरा एक ड्रग होता है एंटीपायरिन. सो एंटीपायरिन इज ड्रग used as a analgesic antipyrine. So this drug is also a water soluble drug and distributed in the total body water, and that's why this drug is used to measure the total body water of your body. तो एंटीपायरिन जो है टोटल बॉडी वाटर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. तो मार्कर कंपाउंड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ टोटल बॉडी वाटर, दैट इज एंटीपायरिन. तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं बोलता हूँ, बहुत जगह पे मैं बोल भी जाता हूँ. तो एंटीपायरिन इज यूज्ड to measure the total body water. You have to remember these kind of drugs, they are distributed in the total body water. Now what is the second compartment?
Second compartment is nothing but the extracellular space. एक्स्ट्रा मतलब क्या है, अदर देन सेलुलर मतलब क्या है, सेल के सेल के बाहर का स्पेस, एक्स्ट्रा सेलुलर और इट इज आल्सो नोन इंटरस्टिशियल स्पेस. So low molecular weight molecules such as a mannitol, so that is distributed in the extracellular space. Third compartment is nothing but intravascular space. Intravascular, इंट्रा मतलब क्या है, अंदर, वेस्कुलर मतलब क्या है, ब्लड वेसल. ब्लड वेसल पे भेंडी, अंदर क्या होता है ब्लड वेसल के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर होता है आपका ब्लड. सो इंट्रावेस्कुलर मतलब ब्लड कंपार्टमेंट. सो व्हिच काइंड ऑफ ड्रग्स दे आर distributed in the blood only. So those drug which binds to protein, so protein bound drug, they are present in the intravascular space. Very strong and protein bound molecule like heparin. Heparin क्या होता है भाई, heparin is nothing but the anticoagulant. It is an anticoagulant. Okay, it is a natural anticoagulant present in your blood. We have already seen ABCD of heparin. पूरा उसके बारे में देखा है. लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन क्या होता है, मोलिकुलर वेट कितना होता है, उसका काम क्या है, सब देखा है. So it is a distributed in the intravascular space मतलब ब्लड. बॉडी कंपार्टमेंट इज अ बॉडी फैट. ठीक है ना, आप जो ठूस ठूस के भरते हो, पूरा गोल मटोल होके जा रहे हैं. सो जो बॉडी फैट होता है, so in the body fat which kind of drugs they are distributed, so highly lipid soluble drugs, obviously highly lipid soluble drugs, they are distributed in the total body fat like DDT. DDT क्या है, ये होता है आपका पेस्टिसाइड. इट इज अ पेस्टिसाइड used in the used to spray on a crop. DDT, ठीक है, मेलाथायोन, पैराथायोन वगैरह बहुत सारे. So all these are the organophosphate compound. Organophosphate compounds, they are highly lipid soluble drugs. मैंने पहले आपको एक एग्जांपल में बोला था आई थिंक. सो सपोज कोई फार्मर है, खेती करने वाला, वो अगर क्रॉप के ऊपर आपका जो पेस्टिसाइड है स्प्रे कर रहा है एंड बाय चांस डायरेक्शन ऑफ विंड विंड का डायरेक्शन अगर चेंज हो गया और वो सब स्प्रे कर रहा है, वो उसके शरीर पे आ जाएगा. एंड as these organophosphate compounds, they are highly lipid soluble, they are absorbed from your intact skin. आपके स्किन के ऊपर भी अगर गए, वहां से वो absorb होगा बॉडी में और आदमी को टॉक्सिक हो जाएगा, आदमी मर जाएगा. दैट्स व्हाई सो आइडियली जो स्प्रे करते हैं क्रॉप के ऊपर पेस्टिसाइड, उन्होंने क्या करना चाहिए, उन्होंने प्रॉपरली खुद को ड्रेस करना चाहिए. ड्रेसिंग अच्छा होना चाहिए उनका, उनके उन्होंने हैंड ग्लव्स यूज करना चाहिए, उन्होंने सन ग्लासेस यूज करना चाहिए ताकि कोई भी पेस्टिसाइड का ड्रॉपलेट्स उनकी आंखों में ना जाए. तो हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स लाइक डीडीटी, थायोपेंटोन सोडियम. So thiopentone sodium is a barbiturate acid derivative used as a general anesthetic. So these kind of drugs, they are distributed in the total body fat. Now which kind of drugs they are distributed in the bones? बोन्स में कौन से ड्रग जाएंगे बेटी, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. फ्लोराइड एंड लीड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, जिसमें फ्लोराइड होगा, लीड होगा. सो दोस काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बोन्स. सो यू हैव टू रिमेंबर, क्वेश्चन आ सकता है. ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन द डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट. आपके बॉडी में टोटल बॉडी वेट होता है अल्कोहल या एंटीपायरिन, सो दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है, इसमें वाटर सोल्युबल मॉलिक्यूल्स सच एज मैंटोल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. इंट्रावेस्कुलर स्पेस होता है हाईली strong and protein bound drug, strongly acidic drug, protein bound drug like heparin. So in the intravascular, in the total body fat, so lipid soluble drugs like DDT and thiopentone. In the bones, chloride and lead, that is distributed. Now we'll see the different barriers. So first one is a BBB, triple B, blood brain barrier. ये बैरियर मतलब क्या, बैरियर मतलब ये क्या, दरवाजा. जैसे आपके घर में दरवाजा होता है, कोई भी मुंह उठा के आपके घर में नहीं आ सकता, क्योंकि आप दरवाजा बंद करके रखते हो ना. किसको परमिट करते हो आप, जो आपके फैमिली का मेंबर है, आपका आपका चचेरा भाई, कजन या फिर आपका कोई रिश्तेदार है, तो उसको आप परमिट करते हो, किसी को भी आने नहीं देते. राह चलते को तो घर में नहीं आने देते ना. सो दैट इज यू हैव अ डोर इन योर हाउस, दैट इज अ बैरियर टू गेट एंट्री of new member, unknown member in your house. So likewise that in a body there are certain organs which have gates, which have doors. They are known as the barriers. So first one is nothing but the blood brain. This is very very important because everything what is absorbed from body, what is absorbed from the side of organization will go into the blood, and everything in the blood will not get entry into the blood brain barrier.
ब्लड ब्रेन बैरियर में हर कोई चीज नहीं जा सकता है, उसके लिए रेस्ट्रिक्शन है, वहाँ पे गेट है और वो गेट का नाम है ब्लड ब्रेन बैरियर. So this blood brain barrier is made of capillaries. Capillary मतलब small blood vessels consist of endothelial cell which are joined together by a tight intracellular junction known as a blood brain barrier. Okay, so whatever blood is there, blood में आपका सब कुछ है, न्यूट्रिशन है, विटामिन्स है, ड्रग ड्रग भी है. व्हाट काइंड ऑफ ड्रग दे विल गेट एंट्री इनटू द ब्रेन, ब्रेन में कौन से ड्रग जा सकते हैं, कौन से नहीं जा सकते, वो कौन डिसाइड करेगा? आप, मैं या डॉक्टर, तीनों भी डिसाइड नहीं करेंगे. डॉक्टर को भी मालूम नहीं कौन सा ड्रग है, तो वो कौन डिसाइड करेगा? ब्लड ब्रेन बैरियर. ही विल डिसाइड वेदर दैट ड्रग विल गेट एंट्री इनटू द ब्रेन और नॉट. Now again that depends on the physical chemical properties of drug. If drug if drug is if drug is a lipid soluble, then it will get into the brain. Blood brain barrier is nothing but the brain capillary barrier consisting of endothelial cells which are joined together by continuous tight intracellular junction, that is the BBB. Now blood brain barrier is not present in all brain, it is all absent at a certain areas of brain. Okay? Blood brain barrier सभी जगह पे नहीं होता है, कुछ जगह पे ये absent होता है. कहाँ पे absent होता है बेबी? So it is absent in the pituitary gland, it is absent in the area postrema, it is absent in the median hypothalamic emissions. Okay, ये तीन रीजन होते हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड में बीपीपी नहीं है, वहाँ पे पोस्ट एरिया पोस्टरमा में नहीं है, हाइपोथैलेमिक इमिएशंस में नहीं है. ये क्या है? दीज आर द पार्ट्स ऑफ ब्रेन. व्हेन वी विल सी नर्वस सिस्टम एट द टाइम आई विल एक्सप्लेन. नाउ सेडेटिव, hypnotics, anticonvulsant, anesthetic drugs, they they easily get entry into the brain. Sedative drugs, hypnotic, anticonvulsant, anesthetic drugs, they easily can cross the blood brain barrier because they are highly lipid soluble drug. तो लिपिड सोल्यूबल ड्रग जो होता है वो एंट्री पा लेता है ब्रेन में. दैट्स व्हाई दे एक्सर्ट देयर सेडेटिव और हिप्नोटिक और एंटी कन्वर्जेंट और एनेस्थेटिक एक्शन इन द ब्रेन, राइट? बिकॉज दे आर हैविंग हाई लिपिड सोल्युबिलिटी. नाउ यू कैन सी ओवर हियर. सो ब्लड ब्रेन बैरियर क्वेश्चन आया था जीपैट 2021 में. बेटी कैसा क्वेश्चन आया था बोलता हूँ मैं. देयर इज अ टाइट जंक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स. ये जो पर्पल कलर के सेल्स है, purple color key cell, that is known as endothelial cell. So they are joined together to form a tight junction known as the blood brain barrier. Blood brain barrier. Blood brain barrier. A question आया था astrocytes. Astrocytes are present in following part और उसमें एक ऑप्शन था blood brain barrier. Question था GPAT 2020. When we'll see nervous system at the time, also I'm going to explain same thing. So a tight junction of endothelial cells and capillary that restrict the entry of drugs into the brain known as the blood brain barrier. But sedative, hypnotics, anticonvulsant, anesthetic, highly lipid soluble drugs, they are permitted into the brain. Water soluble drugs, they are not permitted into the brain. अगर कोई वाटर soluble drug है, it will not get entry into the brain. If large high molecular weight water soluble drugs are there, it will not get entry into the brain. Okay, so for example antibiotics, so antibiotics will not get entry into the brain easily. ठीक है, तो आप बोलेंगे सर फिर एंट्री नहीं कर सकते तो कैसे फिर आदमी. so how to clear the infection of brain? remember when there is infection of brain में अगर कोई infection हो गए उसको बोलते हैं meningitis. infection of layers of brain is known as meningitis. एंड वे याद रखो इन्फेक्शन ऑफ वायरल इन्फेक्शन अगर हुआ है ब्रेन में, दैट इज नोन एज एन्सेफेलाइटिस. सो मेनिंजाइटिस मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन, लेयर्स ऑफ ब्रेन. मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन इनटू द ब्रेन is known as encephalitis. Meningitis and encephalitis. Okay, now when there is an infection to the brain, meningitis or encephalitis, so there is a weakening of this intracellular junction. ये जो जंक्शन है, टाइट जंक्शन, ये थोड़ा वीक हो जाता है. एंड दैट्स व्हाई वाटर सोल्युबल ड्रग और एंटीबायोटिक विल गेट एंट्री इनटू द ब्रेन एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन. नहीं तो फिर अगर मेनिंजाइटिस हो गए तो आपको ट्रीट करने वाला ड्रग ही नहीं है आपके पास, है ना, क्योंकि वाटर सोल्युबल ड्रग है एंटीबायोटिक, तो वो तो जाएगा ना ब्रेन में, फिर ट्रीटमेंट कैसे होगा? बट ड्यूरिंग द इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन और इन द encephalitis or meningitis in the brain,
What will happen, there is a weakening of this BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है उस टाइम पे वीक हो जाता है और वहाँ से एंटीबॉडी का एंट्री हो जाता है ब्रेन में. ओके, नाउ नॉर्मली सपोज there is no infection, still if you want a water soluble drug to deliver into brain to treat a certain other condition, so what you are doing that, what you can do in that case. Question आता GPAT 2018 में, to increase the penetration or to increase the permeation into the brain or to increase the drug formation across the blood brain barrier, so certain compounds are used. They are known as a penetration enhancer. They are known as a penetration. Example is nothing but the DMSO. ये क्या है? DMSO, dimethyl sulfoxide. DMSO is a dimethyl sulfoxide. But it is used as a penetration enhancer to increase the permeation of water soluble drug into the brain. Now it causes precipitation of proteins of your BBB. जो BBB है इसका प्रोटीन का इसके जो प्रोटीन्स है उसको प्रेसिपिटेट कर देगा, and that's why it increases the permeation of water soluble drug across the. इसका मैकेनिज्म पूछा था GPAT 2000 I think 20 में, नाइपर में भी क्वेश्चन पूछा है. DMSO is used as a penetration enhancer. It causes okay, it causes precipitation of proteins of BBB. That's why it increases the permeation across the BBB of water soluble drug. Again, another example is nothing but the mannitol. Disruption of BBB by mannitol. Mannitol is also used as a penetration enhancer. It will cause disruption. Another system is there known as the dihydropyrimidine redox system. Dihydropyrimidine redox system. It is also used to deliver the drug. It is also used to deliver the drug or to carry the water soluble drug into the brain. So you have to remember the penetration enhancer. आपको याद ही रखना पड़ेगा बस. दो बार क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर. तो DMS को मैकेनिज्म पूछा था एक बार. So it will cause protein precipitation and it will increase the or it is act as a penetration enhancer. और उसका एग्जांपल पूछा था, एग्जांपल ऑफ penetration enhancer उसका एक नाइपर में पूछा था और एक मैकेनिज्म होता है disruption of blood brain barrier by mannitol, and this dihydropyrimidine redox system is used as a drug carrier for the brain. दूसरा एक होता है blood CSF barrier. So second is nothing but the blood CSF barrier. So as like blood brain barrier, so there is a blood CSF barrier. तो जो भी ब्लड में जाता है, जो भी ड्रग्स ब्लड में है, सभी ड्रग्स और सभी कंपाउंड्स, whatever compounds or drugs are in the blood, they will not get entry into the CSF. CSF क्या होता है बेटी? Cerebrospinal fluid. So everything will not get entry into the CSF. So again entry is restricted because of the blood CSF barrier. So it is formed by capillary plexus. Capillary plexus मतलब क्या? Capillary network, capillary plexus of your endothelial, plexus of lateral, third and fourth ventricles. Ventricles, ब्रेन में जो ventricles है उसमें जो capillary network है जो बनता है, that is known as a blood CSF barrier. So formed by capillary plexus of the lateral, third and fourth ventricle. So what is the function of ventricle? Ventricles का क्या काम है? So cerebrospinal fluids are there. It is a synthesized in the ventricles of brain. Capillary endothelium is. So एक क्वेश्चन आया था GPAT 2019 में, सॉरी GPAT 2018 में. कौन सा क्वेश्चन आया था? ये क्वेश्चन आया था द कैपिलरी एंडोथेलियम, कैपिलरी नेटवर्क, कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट इन द एंडोथेलियम ऑफ योर वेंट्रिकल्स. ओके, एक ऑप्शन उसमें ऑप्शन था कोरॉइड प्लेक्सस. दिस कोरॉइड प्लेक्सस इज द कैपिलरी नेटवर्क और कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट इन द ब्रेन और वेंट्रिकल्स नोन एज अ कोरॉइड प्लेक्सस. तो क्वेश्चन उसके ऊपर आ चुका है. Capillary network present in the brain, that is a choroid plexus. Okay, you have to remember. Now open junction or gaps, that is known as a blood CSF barrier. It has a similar properties like blood brain barrier. Lipophilic drugs जो है, highly lipophilic drugs, they can easily get entry into the CSF. इसके ऊपर भी एक बार आ चुका है, मैंने बोला है यहाँ पे क्वेश्चन आया, इसके ऊपर 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है. Now likewise that there are another barrier, blood placental barrier. क्या है? ब्लड प्लासेंटल बैरियर. तो वट एवर ड्रग्स आर देयर इन द ब्लड, दे विल नॉट गेट एंट्री इनटू द फीटस. प्लासेंटा किस में होता है बेटी? प्लासेंटा होता है लेडीज में, जो प्रेग्नेंट लेडीज है. तो वट एवर फीटस इज देयर इन द womb of that ladies, so that fetus and
mother is connected by. So whatever drugs they are given to the mother, all the drugs will not get entry into the fetus circulation, and that is prevented by blood placental barrier. तो ब्लड प्लेसेंटल बैरियर जो होता है कि बच्चा जो है पेट में माँ के, वो बच्चा और माँ वो कैसे कनेक्ट होते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड या फिर प्लासेंटा उससे कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वट एवर न्यूट्रिशन जो माँ खाती है, न्यूट्रिशन वगैरह वो सब बच्चे को जाता है ना, कैसे जाता है, प्लासेंटा से। अगर माँ ने कोई ड्रग ले लिया तो वो ड्रग भी कहाँ जाएगा, ब्लड में प्लासेंटा में जाएगा, नहीं जाएगा। दैट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। तो देयर इज एग्जिस्ट ए बैरियर नोन एज ब्लड प्लेसेंटल बैरियर। जो भी माँ के ब्लड में है वो सब बच्चे के ब्लड में नहीं जाएगा जो पेट में है, क्योंकि वहां पे क्या है, ब्लड प्लेसेंटल बैरियर, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, चेक करता है वो कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, जो अच्छा नहीं है उसको हटा लिया। सो ब्लड प्लेसेंटल बैरियर इज द बैरियर प्रेजेंट बिटवीन मैटरनल एंड fetal blood vessels, are they are separated by a tissue layer made up of fetal trophoblast। तो आपको पूछेगा क्वेश्चन, क्या पूछेगा, blood placental barrier is made from the fetal trophoblast, जो बच्चे के trophoblast cells होते हैं, cells type of cell, तो fetal trophoblast। Blood placental barrier is made up of fetal trophoblast basement membrane and endothelium is a placental barrier. Only lipid soluble drugs having molecular weight less than 1000 delta, they can cross the placental barrier. Even ethanol can cross, sulfators can cross, barbiturates can cross, anesthetic drugs can cross, then steroids, anticonvulsants, narcotic analgesic, antibiotics can cross by simple division। मतलब अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है और उसको अगर पीने का शौक है 90 मारने का, तो वो लेडीज ने अगर 90 मार लिया, दारू पी रही है, तो उसका असर उसके बच्चे के ऊपर होगा, बिकॉज वो जो पीती है अल्कोहल, अल्कोहल इज इजीली कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर, वो प्लेसेंटा से बच्चे में जाता है, बच्चे को सीरियस, बच्चे को जो बने है उसको डिप्रेस करता है, या फिर उसको अगर बच्चे जो अर्ली प्रेगनेंसी है, सो इन दैट केस देयर इज हाइड्रोसेफेलस, मतलब उसकी ब्रेन पूरा डेवलप नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई ये लेडीज वगैरह जो आजकल के जो मॉडर्न लेडीज है वो सब करते हैं, सो दे शुड नॉट ड्रिंक अल्कोहल, दे शुड नॉट स्मोक इन द प्रेगनेंसी, बिकॉज that nicotine, that alcohol can cross the placental barrier and can adversely affect that fetus, okay। then again narcotic analgesics जैसे morphine हो गया, codeine थे, so these drugs can cross the placental barrier। lipid soluble drugs like barbiturates, anesthetics, they can cross the blood placental barrier, sulfonamides, okay। again nutrition is carried to a fetus by carrier mediated immunoglobulin endocytosis। न्यूट्रिशन जो है ब्लड में, किसके, माँ के ब्लड में जो न्यूट्रिशन है वो बच्चे को कैसे जाएगा, बाय कैरियर मेडिएटेड, जो माँ के पेट में एंटीबॉडीज है, जिससे होता ना कोरोना पीरियड चल रहा है जैसे, सो इफ देयर इज अ कोरोना इन्फेक्शन टू द मदर, सो उसके पेट में जो बेबी है उसको कोरोना नहीं हुआ, क्यों, बिकॉज कोरोना इन्फेक्शन हो गया मदर को, तो वो एंटीबॉडीज बनाएंगे उसके आगे, दैट इज नोन एज इम्यूनोग्लोबिन्स। दैट इम्यूनोग्लोबिन्स इज ट्रांसफर्ड टू द fetus by the process of exocytosis, that is known as a natural passive immunity, naturally acquired passive immunity। what is meant by teratogenicity? teratogenicity क्या होता है, ये जो टर्म है कौन सा, teratogenicity, what is teratogenicity? any abnormal development of your fetus due to drugs, that is known as teratogenicity। for example, there is one drug known as thalidomide, there is one drug known as thalidomide, उसका एक्सपेरिमेंट थैलिडोमाइड, देयर इज वन ड्रग नोन एज थैलिडोमाइड। ये जो थैलिडोमाइड नाम का ड्रग है, दिस ड्रग वाज यूज्ड इन द प्रेग्नेंट वुमन फॉर कंट्रोलिंग द मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस मतलब जो प्रेगनेंसी की वजह से मूवमेंट होता है, वोमिटिंग होता है, मोशन सिकनेस। थैलिडोमाइड वाज द ड्रग यूज्ड टू कंट्रोल द मोशन सिकनेस इन द प्रेग्नेंट वुमन। इट वाज ऑब्जर्व्ड लेटर, एक थैलिडोमाइड ड्रग जो है वो मोशन सिकनेस के लिए यूज किया था प्रेग्नेंट वुमन में before 1920, okay, 1920। so this drug we used to prescribe to pregnant women, बहुत सारे डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया। so it was observed later, जब उनके बच्चे हुए, वो बच्चे कैसे हुए, जब उनके बच्चे हुए तो वो बच्चे कैसे हुए, ऐसे there is absence of limbs, absence of limbs। ये देखो उसके पैर कितने छोटे छोटे, पैर है नहीं, हाथ तो उसको है नहीं, उसको बोलते हैं absence of limb।
condition is known as a phocomelia. This condition is known as a phocomelia. इसको क्या बोलेंगे? Phocomelia. तो this is the teratogenic effect of your thalidomide. एक thalidomide जो ड्रग है, okay, thalidomide, उसका एडवर्स इफेक्ट होता है teratogenic. What is that? Phocomelia. Phocomelia means absence of limbs. Phocomelia means absence of limbs. तो हाथ पैर जो है वो नहीं रहेंगे. So phocomelia. That is the adverse effect of thalidomide, and that is a teratogenicity. It is a teratogenic effect of thalidomide. There are a lot of drugs which has a potential to cause teratogenicity if used in the pregnant woman. अगर कोई बहुत सारे ड्रग का एग्जांपल होता है, अगर प्रेग्नेंट वुमन में दे दिया तो उसका teratogenicity हो जाएगा. ठीक है. So this is known as a thalidomide tragedy. इसको बोलते हैं thalidomide tragedy. इसमें बहुत सारे बच्चों को ऐसे ही पैदा हुए. And later on it was observed that thalidomide was responsible, and then thalidomide was banned from the market. बाद में थैलिडोमाइड का यूज बंद कर दिया. एंड लेटर ऑन उसके ऊपर और रिसर्च हुआ. तो थैलिडोमाइड जो है उसमें एक्चुअली इट इज अ रेसमिक मिक्सचर. इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू इनएंशियोमर. ठीक है. एक होता है आर एंड एक होता है एस. दो इनएंशियोमर होते हैं आर एंड एस. तो थैलिडोमाइड के दो इनएंशियोमर. इट इज अ रेसमिक मिक्सचर एंड आर एंड एस आर द टू इनएंशियोमर. एंड दिस phocomelia, जो phocomelia था, that is only because of the yes enantiomer. So R enantiomer is not a teratogenic. Is not a teratogenic. Only yes enantiomer is a teratogenic. Later on is also. But now it is not no more used. It is no more used. Okay? Now there are a lot of other drugs which can cause teratogenicity. बहुत सारे drugs है बाकी भी. जैसे for example carbamazepine is there, then phenytoin is there, sulfonamides are there. Okay, then all the anti-cancer drugs, they can cause teratogenicity. Okay, there are a lot of drugs. Deficiency of folic acid leads to neural tube defect. A lot of vitamins they are. We'll see few minerals. So stages during which teratogen show fetal abnormalities. ठीक है. कोई अगर लेडीज प्रेग्नेंट हो गई, ऐसे आजकल तो मालूम नहीं कैसे, लेकिन शादी करने के बाद प्रेग्नेंट हो जाती है. स्टेजेस ड्यूरिंग विच teratogen show fetal abnormality. तो प्रेग्नेंट होने के स्टेजेस होते हैं. जैसे फर्स्ट वीक, पहले 2 वीक्स जो होते हैं उसमें क्या होता है? कंसेप्शन. देयर इज अ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन स्टेज. नाउ इफ दैट लेडीज टेक्स एनी पोटेंशियल teratogenic ड्रग इन दिस पीरियड, सो व्हाट विल हैपन? देयर इज अ मिसकैरेज. तो जो बच्चा पेट में रुकता ही नहीं, दैट इज अ मिसकैरेज हो जाता है उसका. पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज 2 to 8 weeks. And if any pregnant woman takes any teratogenic drug, जैसे बोले थैलिडोमाइड हो गया, आपका फिनेटोइन हो गया, आपका कार्बामेज़ेपिन हो गया, आपका वैल्पोरिक एसिड हो गया, बहुत सारे. Okay, you will find the list. I will also see. In the 2 to 8 weeks, a pregnant woman takes this teratogenic drug. So 2 to 8 weeks is nothing but the period of organogenesis. Organogenesis period मतलब क्या है? इसमें क्या होता है? ऑर्गन्स बनते हैं बच्चे के. 2 से लेके 8 हफ्ते तक जो पीरियड होता है प्रेगनेंसी के बाद में, इसमें क्या बनते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं. हाथ, पैर, कान, नाक, ये सब ऑर्गन्स, लीवर वगैरह, किडनी, ये सब बनते हैं. आपने देखा होगा ना, बहुत सारे न्यूज में आता है कि यार ये बच्चा है, उसका दिल और फेफड़ा अटैच है, उसका किडनी दूसरी जगह पे है. तो ऐसे बहुत सारे न्यूज. दैट इज ऑल आर एडवर्स इफेक्ट्स. सम आर जेनेटिक बट मोस्ट ऑफ द आर द एडवर्स इफेक्ट. तो 2 to 8 वीक्स में अगर कोई teratogenic ड्रग ले लिया, so that will affect the organogenesis, and that's why these effects will be found. कौन से? क्लिप प्लेट. then optic atrophy मतलब क्या है? अंधा पैदा होगा, अंधा. ऑप्टिक एट्रोफी. मेंटल रिटार्डेशन, पागल पैदा होगा. न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट मतलब उसका स्पाइनल कॉर्ड ठीक से बनेगा नहीं. इन दिस 2 to 8 weeks in teratogenic drug is taken, so that may leads to clip plate defect, optic atrophy, mental retardation, neural tube defect, etc. etc. Now, if pregnant woman takes any teratogenic drug in 8 weeks onward, 8 हफ्ते के बाद के डेट्स में लेती है, तो that is a period for growth and development of fetus. So in that there is a development and function. तो ये प्रेगनेंसी के डिफरेंट पीरियड होते हैं, उसमें अगर कोई teratogenic ड्रग ले लिया तो बच्चे के ऊपर क्या असर हो सकता है? पहले 2 वीक में अगर कोई teratogenic ड्रग ले लिया तो क्या होगा? मिसकैरेज होगा. दूसरे 2 से लेके 8 हफ्ते तक अगर ले लिया teratogenic, तो ये वाले डिफेक्ट्स हो. मेंटल रिटार्डेशन, ऑप्टिक एट्रोफी, clip plate. So these are the teratogenic effect of drug.
लिस्ट ऑफ टेराटोजेनिक ड्रग्स आर आल्सो देयर। बहुत सारे ड्रग्स टेराटोजेनिक होते हैं जो होते हैं, मैंने बोला है कि जैसे आपका रेडोमाइड हो गया, उसके बाद में फिनेटोइन हो गया, कार्बामेज़ेपिन, वैल्प्रोइक एसिड। ये कैसे है, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको याद रहते जाएगा, क्योंकि मेरा तो काम तो पढ़ाना है, तो मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे ऑटोमेटिकली याद हो जाए। नाउ नेक्स्ट बैरियर इज नथिंग बट द ब्लड टेस्टिस बैरियर। ये आप बोलेंगे सर ये किस में होता है, तो ऑब्वियसली ये सब सिर्फ मेल्स में होता है, क्योंकि फीमेल्स में तो टेस्टिस होता नहीं। टेस्टिस का अर्थ होता है मेल्स में होता है, तो ऑब्वियसली ब्लड टेस्टिस बैरियर। ये मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये सब बुक्स में है, इसलिए बुक्स का ही पढ़ रहा हूँ। तो बोलेंगे सर कुछ भी पढ़ा। So blood test is barrier. So whatever drugs you are taking, each and every drug will not get entry into the testis. एक ड्रग आपके जो ब्लड में है वो टेस्टिस में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? वहाँ पे वाशमैन खड़ा है। कौन है वाशमैन? टेस्टिस बैरियर. So it is made up of sertoli cell junction and it is not made from capillary endothelium. एक पर्टिकुलर टाइप के सेल्स होते हैं सर्टोली सेल्स. So it is sertoli cell junction. क्वेश्चन एज इट इज इसके ऊपर आ चुका है. सर्टोली सेल जंक्शन इज प्रेजेंट इन द, आपको आएगा उसका आंसर होगा ब्लड टेस्टिस बैरियर. सो द ब्लड टेस्टिस बैरियर इज मेड ऑफ सर्टोली सेल्स एंड नॉट बाय द कैपिलरी. इट इज अ टाइट जंक्शन बिटवीन सर्टोली सेल्स एंड दैट एक्ट्स एज ब्लड टेस्टिस बैरियर. तो अगर आपने कुछ ड्रग ले लिया और वो है ना, बहुत सारे ड्रग्स होते हैं कि देयर आर ड्रग्स व्हिच इनहिबिट द स्पर्मेटोजेनेसिस, तो वो लेंगे तो आपका स्पर्म्स बनेगा ही, विल लॉस द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपको बच्चा नहीं होगा. ठीक है, ब्लड टेस्ट. सो एवरीथिंग whatever you are taking will not go into the testis, so it has a selection. So again over there also there are certain physicochemical properties of drug, those only permitted. जैसे आप अल्कोहल लेते हो, तो अल्कोहल जो ज़्यादा पीता है उसको बाद में बच्चा नहीं होता. क्यों? बिकॉज अल्कोहल सप्रेसेस द स्पर्मेटोजेनेसिस. स्मोकिंग, there are a lot of things. So distribution, so again this part is nothing but the distribution is permeability rate limited in case of ionic, polar or water soluble drugs. As it is question is line के ऊपर आ चुका है. Distribution is permeability rate limited in case of ionic, polar or वाटर सोल्यूबल ड्रग. जो वाटर सोल्यूबल ड्रग है या फिर आयनिक ड्रग है या फिर पोलर ड्रग है, डिस्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर डिपेंड करता है. परमेबिलिटी, उसका परमेबिलिटी कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयनिक, पोलर और वाटर सोल्यूबल ड्रग इज परमेबिलिटी रेट लिमिटेड. क्वेश्चन एज इट इज आ चुका है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिपोफिलिक ड्रग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिपोफिलिक ड्रग इज अ परफ्यूजन रेट लिमिटेड. मतलब क्या, जो लिपोफिलिक ड्रग है उनका डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर डिपेंड है? परफ्यूजन रेट. परफ्यूजन रेट GPAT 2018 में क्वेश्चन आया था. व्हाट इज मीन बाय परफ्यूजन रेट? व्हाट इज परफ्यूजन रेट? इट इज द रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू द पर्टिकुलर टिश्यू. एक टिश्यू को ब्लड फ्लो कितना जाता है 1 मिनट में, क्या बोलेंगे? परफ्यूजन रेट. तो डिस्ट्रीब्यूशन इज अ परफ्यूजन रेट लिमिटेड इन केस ऑफ लिपोफिलिक ड्रग. हाईली लिपोफिलिक ड्रग जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इज अ परफ्यूजन रेट लिमिटेड. जितना ज्यादा ब्लड फ्लो रहेगा उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा. Distribution is permeability rate limited in case of water soluble drug, okay, ionic drug, polar drug. Distribution is a perfusion rate limited in case of lipophilic drug. You have to remember. So, now what do you mean by perfusion rate? Perfusion rate क्या होता है? Volume of blood that flows per unit time, per unit volume to a particular tissue. Perfusion rate के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है बेंडी, याद रखो. That perfusion rate is nothing but the volume of blood that flows per unit time, per unit volume to the particular tissue. Unit per ml per minute per ml. It was a question in GPAT 2008. Volume of distribution. Volume of distribution क्या है? It is a hypothetical volume. Volume of distribution. It is denoted by VD. Volume of distribution is denoted by V, capital V, small v. Volume of distribution is nothing but the hypothetical volume of body fluids in which ड्रग इज डिसॉल्व और डिस्ट्रीब्यूटेड. जैसे आफ्टर एब्सॉर्प्शन, ड्रग एब्सॉर्प्शन हो गया, उसके बाद में ड्रग कहाँ गया? सुमंत्र हो गया क्या? नहीं, वो ड्रग ब्लड में ही रहेगा. वो ड्रग आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जा सकता है, वो ड्रग आपके टोटल बॉडी वाटर में जा सकता है, वो ड्रग आपके लीवर में जा सकता है, किडनी में जा सकता है, आपके लंग्स में जा सकता है. सो हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इनटू व्हिच ड्रग इज
dissolved or distributed, known as the volume of distribution, by represented by VD, volume of distribution. Now it is nothing but the total amount of, wait, what is volume of distribution? Total amount of drug in the body, total amount of drug in the body divided by plasma drug concentration. That is nothing but the volume of distribution. Volume of distribution is equal to x divided by c. x x मतलब आपकी x गर्लफ्रेंड नहीं. What is x? x मतलब amount of drug in a body. c मतलब क्या है? प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन. नहीं तो बोलेंगे सर कुछ भी पढ़ा रहे, एक्स गर्लफ्रेंड वाई गर्लफ्रेंड. तो ये एक्स मतलब क्या? एक्स मतलब एक्स गर्लफ्रेंड नहीं. एक्स मतलब अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी. टोटल अमाउंट कितना है? जैसे 500 मिलीग्राम का टैबलेट ले लिया, उसमें मान लीजिए कि 450 mg पैरास्टामोल एब्सॉर्ब हो गया, तो आपके बॉडी में कितना अमाउंट हो गया? 450 मिलीग्राम. और प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन मतलब आपने ब्लड भी ड्रॉ किया और चेक किया, उसमें एक कॉन्सेंट्रेशन आ गया. तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन योर बॉडी डिवाइडेड बाय प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, नोन एज अ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. हायर विल बी द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, लोअर विल बी द प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन एंड वाइस वर्सा. मतलब क्या? ये बैठा हुआ भाई, मतलब तो मैं ही समझाऊंगा ना, आप थोड़ा समझो. इसलिए हायर द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लोअर विल बी द प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन. आप बोलेंगे सर ये फार्माकोलॉजी में कहाँ से आया? तो इट इज अ पार्ट ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स बॉस. ठीक है, मैंने पहले बोला है एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, ऑल दीज 4 चैप्टर्स आर कॉमन इन द बायोफार्मास्यूटिक्स. तो वो मैं बायोफार्मास्यूटिक्स में अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, तो फिर बाद में बोलेंगे सर आपके बायोफार्मास्यूटिक्स पढ़ाया नहीं हमको. तो ये ऑलरेडी उसमें का ही है. सो हायर विल बी द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लोअर द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन एंड वाइस वर्सा. मतलब क्या? मतलब ये आपका है ब्लड, ये आपका ब्लड कंपाउंड है. If any drug is there, if the drug binds to plasma protein, plasma protein मतलब क्या है? प्लाज्मा में प्रेजेंट रहने वाले प्रोटीन्स. कौन से हो गए इसमें? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन, बहुत सारे. तो उसको अगर ड्रग बाइंड करता है, तो वो प्रोटीन किसका है? प्लाज्मा का, ब्लड का. वो ड्रग का आगे रहेगा बाइंड किया वाला, प्लाज्मा में रहेगा. तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा? लो रहेगा. उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लो रहेगा. So higher is the volume of distribution, lower will be the plasma concentration and vice versa. मतलब जो ड्रग ज्यादा प्लाज्मा में रहता है, जो ड्रग ज्यादा ब्लड में रहता है, तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा? कम रहेगा. और जो ड्रग ज्यादा ब्लड से, ब्लड के बजाय दूसरे कंपार्टमेंट में जाता है, जैसे बॉडी वाटर्स या फिर लिवर को जाके बाइंड करता है, या फिर किडनी में जाता है, ब्रेन में जाता है, लंग्स में जाता है. So distribution of drug into the various body organs. If there is a distribution of drug into various body organs, so that drug has a high volume of distribution. High volume of distribution. जिसका high volume of distribution है, मतलब वो ड्रग कहाँ पे है? आपके बाकी टिश्यू में है, other than plasma. प्लाज्मा में है लेकिन कम है. ठीक है. सो वॉल्यूम, जो ड्रग का ज्यादा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो ड्रग बाकी टिश्यू में जाता है, जैसे लिवर, किडनी, फेफड़े, आपका ब्रेन हो गया, या फिर आपके बाकी जो टिश्यू है. अगर वो टिश्यू में ड्रग गया है तो उसको बोलेंगे हायर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. और वो टिश्यू में अगर गया है तो प्लाज्मा में क्या है? नहीं है या फिर कम है. सो दोज ड्रग व्हिच हैज अ हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दे बाइंड्स टू एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यू. एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यू मतलब आपका ब्रेन, लंग्स. ओके. So those drug which will have higher volume of distribution will bind to the extravascular tissue and will less bind to plasma, less bind to blood. Okay. Now those drug which have low volume of distribution, they will more bind to plasma, means they will present more amount in the blood and they will present in the less amount in the tissue. So higher will be the volume of distribution, lower will be the plasma concentration and vice versa. ये लाइन का मतलब समझ में आ गया? Because this is nobody is going to explain you. ये लाइन का मतलब समझ में आ गया? इसका जो भी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, उसका प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन कम होगा. जिसका भी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है, उसका प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा. ठीक है. नाउ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज लो व्हेन हाई परसेंटेज ऑफ ड्रग इज बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन. ये ऑलरेडी मैंने बोला है, मुझे मालूम है. ठीक है. सो if any drug is able to bind your plasma protein, अगर कोई ड्रग आपको प्लाज्मा प्रोटीन को बाउंड करता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो ड्रग कहाँ पे है? ब्लड में है, एंड उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कम है. सो दोज ड्रग which binds to plasma protein will have a lower volume of distribution
and most of the drug is present in the blood. Okay, and those drug which has a low volume of distribution, they are easy to dialyze. इसका डायलिसिस करना बहुत इजी होता है क्योंकि सभी ड्रग कहाँ पे है, ब्लड में, ब्लड में का डायलिसिस कर देंगे. अभी जो ड्रग है, दोज ड्रग विच हायर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो उसका ड्रग कहाँ पे, वो ड्रग कहाँ पे, वो ड्रग कहाँ पे, वो बाकी टिश्यूज में है ना, प्लाज्मा में प्लाज्मा में नहीं है, उसका डायलिसिस करेंगे तो क्या करेंगे, प्लाज्मा में है ही नहीं वो ड्रग, तो डायलिसिस करके फायदा क्या है. So that's why dialysis is effective in the removal of drug who has a low volume of distribution. Dialysis is not effective in the removal of drug who has a higher volume of distribution. समझा गया? अरे भाई समझा गया? Now we'll see the next point. What is next point? Now this relationship is used to calculate the volume of distribution by using dose. This relationship can be used for calculating the relationship between, relationship can be used to calculate the volume of distribution of drug using dose only. आपको अगर डोज मालूम है ड्रग का, आप वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसका कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस रिलेशनशिप कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द volume of distribution of drug by using dose only. Again, tissue binding and accumulation of drug with high volume of distribution value raises possibility of displacement of other agent or displacement by other agent changing in the pharmacological effect. Tissue binding of drug मतलब जो ड्रग है जो बाकी टिश्यू को बाइंड करता है, जैसे टिश्यू बाइंडिंग ऑफ ड्रग एंड एक्युमुलेशन ऑफ ड्रग. जैसे ब्लड भी क्या है, ब्लड इज नथिंग मतलब फ्लूइड का टिश्यू. अगर कोई ड्रग ब्लड को बाइंड करता है, दूसरा ड्रग भी जाके वही भी बाइंड करते हैं, तो उसको पहले वाले ड्रग को हटा देगा. ओके, तो टिश्यू बाइंडिंग एंड एक्युमुलेशन ऑफ ड्रग विद हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन value arises the possibility to displace possibility of displacement of other agent by other drug, and that can change the pharmacological property. For example, the same मैं example देता हूँ, warfarin is anticoagulant. We have seen that. So warfarin is inhibit the synthesis of blood clotting factor which are vitamin K dependent. We have seen the mechanism. Warfarin binds 99% to the plasma protein. warfarin ऐसा एक ड्रग है जो 99% प्लाज्मा प्रोटीन को बाउंड करता है. ठीक है, जहाँ पे वो बाइंड करता है उसको बोलते हैं साइट 1. वो अल्बुमिन को बाइंड करता है. सो अल्बुमिन इज अ प्लाज्मा प्रोटीन to which 99% drugs binds. क्वेश्चन आ चुका है, 99% drug binds to which protein? प्लाज्मा प्रोटीन. कौन सा है? अल्बुमिन. राइट डाउन, 99% drug binds to albumin. तो उसके ऊपर डिफरेंट साइट होते हैं, साइट 1, साइट 2, साइट 3, साइट 4, साइट 5. सो साइट 1 इज नोन एज अ वारफेरिन बाइंडिंग साइट. तो वहाँ पे वारफेरिन बाइंड करता है. वहीं पे दूसरा ड्रग बाइंड करता है. कौन सा? फिनाइल ब्यूटाजोल. फिनाइल ब्यूटाजोल आल्सो बाइंड टू द साइट 1 ऑफ albumin. Phenylbutazone has a more affinity to the albumin than warfarin. तो क्या होता है कि जब वारफेरिन देंगे तो वो बाइंड करेगा, उसके बाद में अगर फिनाइलब्यूटाजोन दें आपने तो वो भी वहाँ पे जाके बाइंड करता है, लेकिन वो वहाँ से वारफेरिन को हटा देता है. ओके, सो व्हेन वारफेरिन वाज बाउंड टू ए प्लाज्मा प्रोटीन, so it was unavailable. मैंने बोला है टू शो द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ए ड्रग शुड बी इन अ फ्री फॉर्म. वो बाउंड में था तो वो अनअवेलेबल था फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए. लेकिन जब फिनाइलब्यूटाजोन दिया तो वो उसने वहाँ से उसको हटा दिया, वो उसका बाउंड टू अनबाउंड कर दिया. मतलब बाउंड था फॉर्म, अभी फ्री फॉर्म कर दिया किसका? वारफेरिन का. तो सडन राइज इन वारफेरिन इन द ब्लड causes bleeding. So that is known as a displacement type of drug interaction. So tissue binding and accumulation of drug with a high volume distribution or low volume distribution raises the possibility of displacement by another drug and changing the pharmacological effect. As a drug interaction. Now those drug which bind selectively to the plasma proteins, and those drug which bind selectively to the plasma protein, they will less bind to extravascular tissue. मतलब क्या, जो ड्रग प्लाज्मा में जो प्रोटीन है उसको बाउंड करता है तो वो उसको ज्यादा बाइंड करता है, तो बाकी जो टिश्यू उसको लेस बाइंड करे, कम बाइंड करेगा. ओके, सो दोज ड्रग व्हिच बाइंड्स टू selectively to plasma proteins, they will less bind to extra cellular tissue. फॉर एग्जांपल उसका आता है वारफेरिन. और ब्लड कंपोनेंट्स एग्जांपल क्या है उसका? वारफेरिन. वारफेरिन इज 99% बाउंड टू प्लाज्मा
Warfarin binds to 99% with plasma protein, okay? And it has a very less apparent volume of distribution. वारफेरिन क्या करता है, प्लाज्मा प्रोटीन को बाउंड करता है, तो सारा ड्रग कहाँ पे रहेगा, ब्लड में ही रहेगा. सो इट हैज अ वेरी लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम ऑफ apparent volume of distribution than true volume of distribution. Volume of distribution भी दो है, apparent volume of distribution and true volume of distribution. Volume of distribution थोड़ा ज़्यादा होता है वारफेरिन का, लेकिन apparent volume of real volume of distribution कम होता है, because it selectively binds to a plasma protein. So that's why those drug binds to plasma protein, they have less volume of distribution and they less bind to other tissues. And those drug which have a high affinity to the extravascular tissue, जैसे कोई ड्रग है, जैसे कोई ड्रग है आपके रेटिना को बाइंड करता है, कोई ड्रग है आपके लिवर को बाइंड करता है, ओके. सो ड्रग्स दोज बाइंड्स टू एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यू, दोज ड्रग व्हिच बाइंड्स टू एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यू, दे विल लेस बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन. जैसे एक ड्रग है एंड दैट्स व्हाई दे विल हैव अ हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, जैसे एक ड्रग है क्लोरोक्विन, इज अ एंटी मलेरियल ड्रग, ये मलेरिया में यूज करते हैं क्लोरोक्विन. आपकी क्वीन नहीं, आपकी क्वीन आप देख लो कौन सी क्लोरोक्विन है, ये मलेरिया में यूज करते हैं. ठीक है, तो क्लोरोक्विन इज अ एंटी मलेरिया ड्रग, इट हैज अ वेरी हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है एंड दैट्स व्हाई इट, क्यों ज्यादा है, ये प्लाज्मा प्रोटीन को बाइंड नहीं करता. सो प्लाज्मा प्रोटीन को बाइंड नहीं करता एंड इट बाइंड्स टू ए अदर टिश्यू लाइक सेल्स, योर बॉडी सेल्स एंड रेटिना. रेटिना जो होता है उसके ऊपर जाके बाइंड करेगा. सो इट हैज अ वेरी हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. उसका एडवर्स इफेक्ट भी होता है पिगमेंटेशन ऑफ रेटिना. इट हैज अ वेरी high volume of distribution. That's why drug dose binds to extravascular tissue, to plasma protein, and has a large volume of apparent volume of distribution than the real volume distribution. Example is chloroquine. भाई देखो बेटी, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, याद रखो. Relative volume of different organs, blood flow and perfusion rate under the basal condition. नॉर्मल कंडीशन में जो वॉल्यूम जो है ब्लड का हर एक ऑर्गन में कितना होता है, या फिर ब्लड फ्लो कितना होता है किसी ऑर्गन को अंडर नॉर्मल कंडीशन. टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड, टोटल वॉल्यूम कितना है बॉडी में, 70 लीटर्स. ओके, टोटल बॉडी वॉल्यूम मतलब जो हर एक का ब्लड वगैरह सब, इंटरटिशियल फ्लूइड, इंट्राटिशियल फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड, सबको मिला के टोटल वॉल्यूम कितना होगा बॉडी का, 70 लीटर्स. एज्यूमिंग द टोटल वॉल्यूम ऑफ योर बॉडी 70 लीटर, तो हर एक में किसको कितना है, तो देखो डिपेंडिंग ऑन दैट organs are classified into three type. Organs are classified into three type. First one is known as a highly perfused organs. Second one is known as a moderately perfused organs. Third one is known as a poorly perfused organs. अभी ये क्या है, highly perfused, moderately perfused, poorly perfused मतलब क्या होता है इसमें पहले. Highly perfused मतलब these are the organs which will get higher amount of blood. So higher perfusion rate, परफ्यूजन रेट ज़्यादा रहेगा इनका, इनको पर मिनट पर एम एल ब्लड सप्लाई ज़्यादा रहेगा. किसको, कौन है हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन, लंग्स, किडनी, एड्रेनल ग्लैंड्स, लिवर, हार्ट एंड ब्रेन. सो दीज आर द हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन्स. ये क्या है, हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन से क्वेश्चन आ चुका है. लंग्स आर द हाईएस्ट परफ्यूज्ड ऑर्गन, क्वेश्चन आ चुका है. लंग्स आर द हाईएस्ट, सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई किसको होता है, लंग्स को होता है. याद रखना है आपको, क्वेश्चन आ चुका है. सो हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन इज नथिंग बट द लंग्स. हाईएस्ट परफ्यूज्ड ऑर्गन कौन है, लंग्स. आप बोलेंगे सर हार्ट है, हार्ट नहीं है बेटी. हाँ, आपको दिल बहुत पसंद है, लेकिन अगर दिल को ज्यादा महत्व दिया तो फिर आपको किडनी बुरा मानती है, आपके लंग्स बुरा मानते हैं, लिवर बुरा मानता है. तो आपको सभी ऑर्गन्स को प्यार करना चाहिए, सिर्फ आप हार्ट को ही प्यार करते हैं, वो भी आपने नहीं, दूसरे के हार्ट को प्यार करते हैं. ये थोड़ा गलत बात है. तो लंग्स में क्या होता है, सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई. तो हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन कौन है, ब्लड फ्लो कितना है, 5000 ml per minute. 100% cardiac output is supplied to your lungs. 10.2 ml per minute per ml blood supply is there. So high perfusion rate is there to the lung. After that there is kidney, that adrenal gland, after that liver, after that heart, after that brain. Now moderately perfused organs. So muscles and skin, they are moderately perfused organ. इनको blood supply moderate amount में जाता है. After that poorly perfused organs.
मतलब इनको ब्लड सप्लाई बहुत ही कम जाता है। कौन है? एडिपोज टिश्यू मतलब फैट सेल्स एंड बोन्स। एक क्वेश्चन आया था, पुअरली परफेस्ड ऑर्गन कौन है? कौन है पुअरली परफेस्ड ऑर्गन? क्वेश्चन आ चुका है, भेंडी। याद रखो, बोन्स, बोन्स आर वेरी पुअरली परफेस्ड ऑर्गन। सबसे कम अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई किसको होता है? बोन्स को। 0.00 0.02 ml पर मिनट पर ml परफ्यूजन रेट। तो सबसे कम परफ्यूजन रेट किसको है? ब्लड के बोन्स को है। सबसे ज्यादा किसको है? लंग्स को है। सबसे ज्यादा कार्डियक आउटपुट भी लंग्स को है। सबसे कम किसको जाएगा? यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया है बेटी, यहाँ पे टेबल में लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है। सो फ्लूइड कंपार्टमेंट ऑफ 70 kg अडल्ट। अगर आप 70 किलो के सांड हो, अगर आप 70 किलो के सांड हो, तो आपके बॉडी में कितना कितना फ्लूइड कौन से डिपार्टमेंट में रहेगा? ठीक है ना, वेरियस डिपार्टमेंट रहते हैं आपके कॉलेज में। फार्मास्यूटिक्स वाले अलग, केमिस्ट्री वाले अलग, कॉमर्स वाले अलग, किसी को कुछ आता नहीं डिपार्टमेंट। तो 70 किलो का सांड अगर है, fluid compartments of 70 kg adults. So in the 70 kg adult में number of compartments are there. Okay, what are the different compartments? So first, vascular fluid. Vascular fluid means what? Vessel मतलब, vessel means blood vessel, fluid मतलब so fluid. So vessel fluid कौन सा होता है? Blood. So vascular fluid means blood और plasma. The vascular fluid. Then ये कितना होता है? So it is a 6 liters. 6 liters of blood is present in your body. 9% of your body weight and 15% of total body volume, or 15% of total body weight. Then extracellular fluid. Extracellular fluid. Extra मतलब other than, cell मतलब cell. Extracellular fluid. तो इसको बोलते हैं interstitial fluid between the cell. So it is known as interstitial fluid, excluding plasma. होता है 12 liters. Then intracellular fluids excluding blood cells, ये होता है 24 लीटर। दिस वाज क्वेश्चन इन जीपैट 2019, सॉरी 20। लास्ट ईयर में ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड एक्सक्लूडिंग ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड सेल छोड़ के जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, बाकी इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर का फ्लूइड। ये बॉडी में तो कितने ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, वो हर एक सेल के बॉडी में कितना फ्लूइड रहेगा। तो टोटल इंट्रासेलुलर फ्लूइड कितना होता है? 23 to 24 लीटर्स। ऑप्शन में वही था, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ इंटरसेलुलर फ्लूइड एक्सक्लूडिंग ब्लड सेल्स। और एक ऑप्शन था 23 लीटर। तो ये चार्ट्स दिए थे ऑलरेडी बुक्स में, मैंने बुक पढ़ा है, उन्होंने राइट कर दिया। टोटल बॉडी वाटर कितना होता है? टोटल बॉडी वाटर 42। आपके 70 किलो के सांड के अंदर 42 लीटर्स क्या होगा? वाटर ही होगा। ठीक है, 42 लीटर्स इज द टोटल बॉडी वाटर। टोटल बॉडी वाटर कितना है? 42 लीटर्स, याद रखो। इसमें वेस्कुलर और प्लाज्मा कितना है? ब्लड कितना है? 6 लीटर्स। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एक्सक्लूडिंग प्लाज्मा कितना है? 12 लीटर्स। इंट्रासेलुलर फ्लूइड एक्सक्लूडिंग ब्लड सेल कितना है? 23 to 24 लीटर्स। क्वेश्चन जीपैट 2022 में आ चुका है। टोटल बॉडी वाटर कितना है? 70 किलो के साथ में 42 लीटर्स आर टोटल बॉडी वाटर। क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। Now next part we'll see markers used for the volume for the measurement of real volume of physiological compartment. आपके बॉडी में जितनी कंपार्टमेंट है, टोटल बॉडी वाटर कितना है, इंटरसेलुलर कितना है, इरिथ्रोसाइट्स कितना है, ठीक है, प्लाज्मा कितना है। आपने बोला है सर कि टोटल ब्लड तो 6 लीटर होता है, लेकिन कैसे पता, आप कैसे मेजर करेंगे? ठीक है, तो मेजर करने के लिए भी बोलता हूँ मैं, डोंट वरी। मार्कर्स यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ रियल फिजियोलॉजिकल कंपार्टमेंट्स। ठीक है, देखो फिजियोलॉजिकल बॉडी कंपार्टमेंट कौन सा है आपका? पहला है प्लाज्मा। प्लाज्मा मेजर करने के लिए, सो फर्स्ट फिजियोलॉजिकल कंपार्टमेंट इज प्लाज्मा एंड मार्कर यूज्ड टू मेजर द प्लाज्मा। मार्कर यूज्ड टू मेजर द प्लाज्मा, इट इज Evans blue, indocyanine green, iodine 131 and albumin. So these are the markers which are used to measure the total plasma in your body. ठीक है, so Evans blue, indocyanine green, then iodine 131, then albumin. So you have to remember these markers. आपको markers याद रखना है, क्वेश्चन आता है। ठीक है, so Evans blue, indocyanine green, iodine 131 and albumin, they are used as a markers to measure the total plasma. कितना होता है? approximate volume in liter, approximate volume in liter, 3 लीटर। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे आपने 6 लीटर लिया है,
मैं 6 बोला है, यहाँ पे 3 बोल रहे हो आप, हमको क्या है, च्यू समझ गए। तो आप नहीं, मैं आप ना ही आपको च्यू बोल रहा हूँ ना ही। सो प्लाज्मा मीन्स इट इज नथिंग बट द प्लाज्मा मीन्स excluding blood cells, that is a plasma, blood cell is में है। तो प्लाज्मा is measured by using Evans blue indocyanine iodine 131 and albumin. Now erythrocytes, total erythrocytes, they are measured by using this marker chromium 51. Question already question already आ चुका है। marker use marker used to measure the erythrocytes in the body. आरबीसी कैसे मेजर करेंगे, उसका मार्कर कौन सा है, क्रोमियम 51। एंड टोटल वॉल्यूम कितना होता है 2 लीटर्स, ये हो गया टोटल 5 लीटर, ये हो गया टोटल 5 लीटर। नाउ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, हाउ टू मेजर द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सो मार्कर्स, नॉन मेटाबोलाइजेबल सैकराइड्स लाइक रैपिनोज, इनुलिन, मैनिटोल, रेडियोआइसोटोप्स, ions like sodium chloride, bromine, sulfate, they are used to measure the extracellular fluid. Inulin, it is a polysaccharide. टोटल बॉडी वाटर टोटल ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना होता है 15 लीटर। नाउ टोटल बॉडी वाटर, आपकी बॉडी में कितना वाटर है 22 लीटर्स। ये मेजर कैसे करेंगे, इट इज मेजर्ड बाय ड्यूटेरियम वाटर, ड्यूटेरिएटेड वाटर D2O, D2O जो है D2O ड्यूटेरिएटेड वाटर, ये क्या है D2O। सो जैसे हाइड्रोजन होता है आपका H1, H2 अगर है उसका आइसोटोप है तो उसको बोलिए ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरिएटेड वाटर मतलब तो H2O की बजाय D2O, ड्यूटेरियम क्या है हाइड्रोजन का ये आइसोटोप है, उसको बोलते हैं हेवी वाटर। So deuterated water is also known as heavy water and that is used to measure the total body water present in the body. Again, tritiated water. Tritiated water मतलब क्या है? H3 HTO, HTO मतलब tritiated water। जो हाइड्रोजन आपका नॉर्मल हाइड्रोजन जो होता है, 2 मतलब ड्यूटेरियम and H3 मतलब ट्रिटियम। So all these are the isotopes of hydrogen. Tritiated water, deuterated water, they are used to measure the total body water. And again one drug is there. क्या नाम है ड्रग का, that is a एंटीपायरिन। एंटीपायरिन, तो ये ऊपर में देखा है आपने। So antipirin is used to measure the total body